Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll be having our 25th lecture, and that is about the monopoly, competition and corporate governance. But before we start our today's lecture, let's have a quick review about our last lecture. In last lecture, we basically introduced the difference or the impact of monopoly and competition in the corporate governance. Like monopoly is that one person or company controlled 1/3 of the local or national market. We discussed कि monopoly में basically एक person या एक company market की 1/3 जो contribution है उसको acquire कर लेता है. So abuses of monopolies are now monopoly क्यों अच्छी नहीं है market में, as we discussed in previous lectures कि कोई भी government ये नहीं चाहती कि उसके मुल्क में कम firms की monopoly हो. So for that they prefer to go for the competition in the market. अगर competition होगा तो obviously you have like cheap prices, best quality products, etc. etc. So normally government चाहती है कि आपकी सोसाइटी में या किसी भी मुल्क की सोसाइटी में मोनोपोली ना रहे और कंपटीशन रहे. Because abuses of monopolies are high prices. If you have monopoly in the market, so obviously you will be having high prices. क्योंकि एक फर्म होगी, so कंपटीशन में कोई दूसरा फर्म नहीं होता, तो obviously you will face some high prices in the market. Wrong allocation of resources. Monopoly से normally competition इतना नहीं होता, so that affect your resource allocation. Competition में if you have competition in the market, so obviously you will use the best resources for your company. लेकिन monopoly में you know कि competition is not there, so obviously you don't know the exact location or position of the resources. So abuse of investor markets by giving wrong information. Monopoly में obviously investors को और market में wrong information flow करती है about the company, because nobody is there to make the benchmark for the standard or for the company's value. So normally investors को और market में wrong information flow करती है. For example, that we are the best company to give you best products, or we are the best company to give you cheap prices. So this किस्म की wrong information flow करती है market में. Maybe कि आपको best product ना मिले, maybe कि आपको cheap चीज़ें ना मिले, आपको महंगी चीज़ें मिले. So लेकिन ये wrong information उस वक्त flow करती है when you have monopoly in the market और आपका competition नहीं होता. When you have competition in the market, obviously, so you can compare different products of different companies and the prices as well. So competition में you can find or you can have the actual information of the company and the product. लेकिन monopoly में basically you don't have any choice. Preventing inventions. One of the basic abuse of monopoly is basically कि you don't go for invention, you don't go for innovation, the company don't go for the entrepreneurship. बस जो रूटीन का काम चल रहा है वही आपको मिल रहा है. So monopoly में you may find some new you would not find new inventions or new products in the market. Competition में basically you will find different products, different brands and different quality products. So abuses of monopolies, जो basic abuse है वो ये है कि आपके market में नई products invention नहीं होती, creativity की कोई बात नहीं करता. Economic instability. Economic instability means कि when you don't have high product in the market, when you have high prices, when you have wrong
allocation of resources, and no creativity, no invention, no new products. So obviously आपकी economic growth इतनी नहीं होती. So if you compare basically two companies, or you compare between two markets, cake market में you have a monopoly of few firms. On the other side, we have a market जिसमें you have a very strong competition between the products. Obviously, जिस market में competition level ज़्यादा होगा, तो obviously you will find some more economic growth in that market. Corruption and bribery. The level of corruption is high in the market, which is captured by the monopolist firms. So corruption और bribery का trend ज़्यादा होता है. Economic power in the hand of few. Monopolies में basically आपकी जो economic power है, आपकी जो market की जो economic power है, वो कुछ लोगों के हाथ में होती है. और you can say कि आपकी मार्केट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ लोगों के हाथ में होती है. सो दे कैन यूज देयर कस्टमर्स हाउ दे वांट. एंटी मोनोपोली लॉज प्रिवेंट्स a firm to make monopoly, prevent unfair price discrimination. Anti-monopoly laws basically prevent firm to make monopolies. If you can remind our previous lectures of merger and acquisition, उसमें हमने डिस्कस किया था कि normally governments they don't like the trend of merger as well as acquisition because that give like some sort of strength to the monopolistic market. So anti-monopolistic laws basically you can adopt either the firm steps from the firm side, or you can take help from the government state laws. So उन काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था. उसका मकसद ये था कि prevent firm to make on monopolies. कि normally companies when they just merge with each other, या जब वो एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उससे आपके मार्केट में मोनोपोली क्रिएट होती है. सो एंटी मोनोपोली लॉस का जो मेन मकसद वो ये है कि बेसिकली यू प्रिवेंट फर्म्स टू मेक मोनोपोली. प्रिवेंट अनफेयर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अनदर प्रिवेंशन ऑफ एंटी मोनोपोली laws are basically कि you prevent the market from unfair price discrimination. Competitive firm is preferred because low prices. In contrast, normally the government or the consumer they want or they prefer to have competition in the market. उससे क्या होता है कि you have low prices, you avoid wastages for competition. Normally जब आपका कंपटीशन होता है मार्केट में तो you avoid wastages. You make your best effort to use your resources, and obviously competition में you have efficiency in the market and consumers taste and preference. So monopoly में normally consumer की taste और preference का इतना ख्याल नहीं किया जाता. So in the competition when you have more competition in the market, so जो कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस उसका बहुत ख्याल रखा जाता है. You can take the example of like different telecommunication in Pakistan के मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स, चीपर रेट्स, मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस नॉर्मली वो इंट्रोड्यूस करते हैं कीपिंग इन माइंड द कंज्यूमर्स टेस्ट एंड देयर प्रेफरेंसेस. The concept, logic and benefits of competition. Entrepreneurial culture leads to more producers and sellers. When you have competition in the markets, obviously that encourages the entrepreneurial activities or the entrepreneurial culture in the market. So उससे क्या होता है कि with the constant interval you have more producers and more sellers in the market. In last lectures we took the example of like America. It's basically individual based societies कि जिसमें हर एक बंदा हर वक्त
they think for the new creation, for the innovation. So जो उनका जो culture है market का, that is based on the entrepreneurship कि so that is one of the reasons के maximum जितनी भी नई products आती है that is from the west side. जितनी भी बड़ी बड़ी multinational companies है that is almost from the west side. Increased supply capabilities. Obviously, when you have competition in the market, so you will be having more supply in the market. You will be having more available products in the market. Cost cutting through research efforts. Competition may normally when you have more competition in the market, obviously then firms go for the research side. How we can make the best product for our customers, how we can make the different products for our customers, how we can make the cheaper products for our customers. So research efforts ज़्यादा होती है in the competition. Reduction in wastages and improvement in efficiency and productivity. As we discussed, कि competition में you won't see sort of wastages in the market or in the from the company side, because company they try to use their resources in their best way. Customer focused and more access to foreign market. Again, in the competition, the market is available for the new producers and sellers. So obviously you can access for more foreign markets for your business. Favorable environment for trade and investment. And best sources utilization, wide range of available goods and services. Competition में environment is favorable for the trade and investment because monopoly में जो entry होती है new entrants के लिए, जो infant industry के लिए, that's very difficult to enter into the market because of the monopoly of that product or service in the market. Resources utilization काफ़ी ज़्यादा होती है competition में, and you have a wide range of available goods and services. Regulations of competition. Competition must be regulated through some legislation which helps in firm dominance, prevent monopolies. अब competition को किसी भी society में there should be regulated through some legislation. किसी कानून के तहत उसको regulate करना चाहिए. Otherwise अगर free hand मिलता है companies को, तो that is again not too much good for the that market or for the economy of that country. So prevent monopolies. Obviously जब legislation या regulation के through when you look after the competition of different firms, so obviously that will reduce the trend of making monopolies in between the firms. Controlling anti-competitive acts like full line forcing and predatory pricing. दूसरा rules and regulations या through legislation जो anti competitive acts हैं आप उसको भी रोक सकते हैं. For example, full line forcing means कि suppose अगर एक कंपनी है, so अगर वो market में सारे resources हासिल करना चाहती है, so that sort of trend can be prevented for a single firm. या प्रेडेटरी प्राइसिंग, अगर एक कंपनी अपनी प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत चीप कर लेता है जो कि अफेक्ट करता है दूसरी फर्म्स को, तो उसको भी आप रोक सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन, थ्रू डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर लिमिटेड कंपटीशन. रेगुलेटरी बैरियर्स वीकन द मैनेजरियल एफर्ट्स एंड बोर्ड सुपरविजन्स लीड टू governance issues. Another thing is कि suppose आपकी मार्केट में जो कंपटीशन लेवल को चेक कर रहा है that is through government rules and regulations, लेकिन बहुत ज़्यादा rules and regulations कभी कभार मार्केट में या कभी कभार जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है
उसके एफर्ट्स को डिस्टर्ब करता है, उसकी जो गवर्नेंस इश्यूज हैं उसको वो डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मार्केट में किसी मुल्क में इफ जो ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर आपका टैरिफ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है डिफरेंट कंपनीज के लिए, इफ यू आर सपोज if you have introduced limited quotas for different companies, so this sort of regulations, this sort of legislation basically disturb the company's performance, the management performance. For example, अगर एक company if they want to enter into the market और आप उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाते हो, नंबर वन। नंबर टू, इफ़ दे वांट टू एंटर इनटू योर मार्केट और आप उसको लिमिटेड कोटा देते हो फॉर टू मेक देयर बिजनेस, और एनी सॉर्ट ऑफ रेगुलेशंस और रूल, सो वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब करेगा उस कंपनी की परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को। Constraints to competition in developing countries. Nationalization and public interest cause constraint for firm to work efficiently. Developing countries में normally the government their main focus or interest is basically the public interest, or their main focus is toward the nationalization. So when you go for the public interest or when you go for the nationalizations, obviously it's a constraint for the firm to work efficiently. Banks' role in restraining emergence of securities market. Bank credit reduces the need to invest in securities market. कि बैंक्स का काफ़ी रोल होता है सिक्योरिटीज़ मार्केट में इमरजेंस किसी भी कंपनी के लिए। सो मोस्टली इफ बैंक्स क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा है तो नॉर्मली दैट रिड्यूसेस द नीड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। नॉर्मली फिर लोग फिर सिक्योरिटीज़ में या कंपनीज में इतना इन्वेस्ट नहीं करते, सो दे simply prefer to invest or to deposit their money into the banks. Banks can play a vital role to analyze the company's value for further businesses. Then lack of competition promotes ownership concentration. Lack of competition, if a society जिसमें competition level ज़्यादा नहीं होता तो obviously जो ownership का जो concentration है वो ज़्यादा नहीं होगा। More competitive markets result in more public firm and less competitive market results in more private firm. So अगर आपके मार्केट में competition level strong है, if new business are allowed to enter into your market, so obviously उसमें companies public firm बनेगी। लेकिन किस लिए? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में कंपटीशन है, द इन्वेस्टर विल कम एंड दे विल इन्वेस्ट देयर मनी इनटू देयर फर्म्स। लेकिन अगर कंपटीशन लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है सो ऑब्वियसली जो यू विल हैव लाइक सम प्राइवेट फर्म्स इन द मार्केट, फिर कंपनीज पब्लिकली ट्रेड नहीं करती, दे सिंपली मेक देयर बिजनेस प्राइवेटली। बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन टू स्टेक होल्डर्स, सिंपली कि द बेनिफिट्स जो कंपटीशन का है टू द मैनेजर्स, के मैनेजर will make their efforts, will make their best effort, and managers will work for the best interest of the company and the shareholders. And the products, के products भी can affect the competition in the market, can affect the product quality as well. Benefits of competition in the product market: low quality products, low prices. Competition के benefits दो तरह के हैं, एक competition in the product market and a competition in the capital market. Product market में you will have like cheap products or quality products with low prices, and competition in the capital market, relationship of firm and financial institution. कि your existence basically in the capital market will be based upon your performance that will lead you toward the loan from the different banks.
अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है सो ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप बैंक के साथ ठीक होगा और वो आपको लोन आसानी से देगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है सो दैट कैन डिस्टर्ब योर रिलेशनशिप विद द बैंक्स एंड आपको लोन फिर इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, firm can take political influence for their benefits, and monopolistic market can lead toward the political influence would result in bad governance। जिस सोसाइटी में कंपटीशन नहीं होता तो ऑब्वियसली जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं दे ट्राई टू टेक द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर देयर फर्म्स। लेकिन अगर कंपटीशन स्ट्रांग होता है मार्केट में तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स वेरी hard to stop the competition between different firms. Competition is the only solution. So today's lecture is about, we will discuss the enforcement of good governance, कि good governance को हम किस तरह enforce कर सकते हैं। First go for private enforcement through market mechanism, or a self-regulation through trade associations or public enforcement। So good governance को we can enforce basically we can, the first thing is to use the market mechanism, means we should have sort of competition or we should create sort of competition in the market। ताकि competition होगा तो obviously competition is itself a mechanism for good governance, because companies perform अच्छा करेगी, they'll be having competition between each other, so this can create good governance practices in the market। or self regulations through trade associations, good governance को we can ensure or we can enforce good governance through the trade association। जितने भी एसोसिएशंस होती है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ ट्रेड एसोसिएशंस होती है, सो उसके थ्रू वी कैन हैव सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉर द फर्म्स। और पब्लिक इन्फोर्समेंट, अगर आपकी फॉर एग्जांपल इफ द कंपटीशन लेवल डजंट इन्फोर्स द गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, या अगर ट्रेड एसोसिएशंस के थ्रू भी नहीं होता तो फिर आप लीगली can force companies to go for the good governance practices। Positive competition reduces the burden of enforcement। Obviously, if there is a positive competition in the market, so that automatically reduces the burden of enforcement। फिर companies के बीच में competition होता है तो normally जो enforcement लॉज या रेगुलेशंस या एजेंसीज है उनको इतनी केयर नहीं होती टू इन्फोर्स द गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, बट इन्फोर्समेंट इज वाइटल। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज के मार्केट में कैपिटल मार्केट में यू मस्ट हैव सॉर्ट ऑफ ट्रेंड कि वो इंश्योर करें गुड गवर्नेंस की इन्फोर्समेंट को। चैलेंजेस टू गुड इन्फोर्समेंट, कि गुड इन्फोर्समेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। द फर्स्ट वन इज रिसोर्सेज, के बिकॉज इन द मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर thousands of companies working in the market, like in the last lecture we discussed about the like New York Stock Exchange and Nasdaq। so जिसमें New York Stock Exchange में probably you will find more firms and bigger firms। On the other side, in Nasdaq, you will find a small number of firms and smaller firms। So, जब आपके पास when you have large number of firms to see their regulations and you want to enforce your law on different companies, on thousands of companies, so obviously for that you need some resources। So, good enforcement के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है resources। Meaningful sanction, another challenges to good enforcement is that there must be a trend of meaningful sanctions for those firms who are not working properly or who are doing bad governance practices। अगर एक फर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, एक फर्म
if they have some issues with the customer, या कंपनी का प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या एनी गवर्नेंस इशू इन द मार्केट या इन द कंपनी, सो उसको कम से कम ये डर होना चाहिए कि मेरी कंपनी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकती है या मेरी कंपनी पे किसी किस्म की सैंक्शन लग सकती है थ्रू डिफरेंट रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन. लेकिन अगर उसको डर नहीं होगा, सो दैट वुड बी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द मार्केट. अ रियल बिग चैलेंज मीन्स कि enforcement is itself a very big challenge for the market. Now competition agencies and competition policies, the role of competition agencies in the competition policies as to prevent anti-competitive practices. Competitive agencies basically they try to prevent anti-competitive practices, to prevent lobbying of interest, or to resist the lobbying of interest groups. Competitive agencies की दूसरा बड़ा जो can say function वो ये है कि जो interest group है उनको resist करना, किसी favor group को favor नहीं करना, बल्कि if you have the skill, if you have the knowledge, if you have the competition, so come and make your business. So interest group की lobbying को ख़त्म करना is one of the main function of competition agencies. Competition policy should be at the top. कि market में there are other aspects, but जो आपका competition policy है वो बाकी तमाम policies के ऊपर होना चाहिए. Adequate resources to investigate anti-competitive practices. Again, you must have an adequate or proper resources that enables you to make investigation for the anti-competitive practices. Good competition policy should be there to prevent monopoly, ensure economic efficiency. Good competition policy इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आपकी monopoly को prevent करता है, that ensure economic efficiency, control dominant firms, discourage merger and acquisition, and कि merger और acquisition को normally वो discourage करता है. Check barriers for new entrants to market, and prevent anti-competitive agreements, and apply to all major segments of the economy, and protect small firms. So these are basically the good competition policy, what they should do, कि उनको क्या करना चाहिए इस policy में. Competition boost corporate governance. Obviously the last and the bottom line is that the competition basically encourages corporate governance or boost corporate governance. So enforcement of good governance, there can be private enforcement through the market mechanism or through voluntary or self-regulation, through trade association, as we have discussed कि enforcement मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है. The first one is either through market mechanism, कि आपके मार्केट में इतनी competition हो firms के दरमियान that automatically enforce the good governance. अगर नहीं, then you can use the trade associations for the enforcement of good governance, or the last option could be you can use the self-regulation, you can use the regulations or the legislation and regulations to make sure the good governance in between different firms. So public enforcement is called if private efforts do not work, if the matter is criminal. So normally जो last option उस वक्त आता है जब आप when you see some sort of criminal activities between different firms, तो फिर उस वक्त you may see the public enforcement to ensure the corporate governance. The positive effects of competition can also reduce the burden of enforcement. Regardless of competition, it is important to have sound rules and regulation. If you have like proper competition in the market, so आपका जो burden है enforcement का
of good governance वो कम हो जाता है, because the firm they have a positive competition between each other, so automatically management will work hard, management will be having good relationship with the board or with the shareholders or the owners. So अच्छी competition market में that encourages automatically or that reduces the burden of enforcement. Enforcement is vital, complementary to competitive mechanism, and often may be required to put in place corporate governance practices. Again, enforcement in one way or the other, it's very important for the good governance practices. अगर आप enforcement करते हो through market mechanism, that is fine. You can use the trade association, that is fine, or you can take help from the public enforcement agencies. So, but the bottom line is that enforcement is very important for the good governance. Challenges to good enforcement: the credible threat of detection, whether from private or public investigation or monitoring, requires resources. के enforcement के लिए, or if you want to detect some fraud in between the firms, so for that you need some resources. So resources again one of the basic tool or challenge to good enforcement, कि आपकी enforcement of good governance उस वक्त होगी जब आपके पास हाथ में कुछ resources होंगे. अगर आपके पास resources नहीं है, so how it will be possible for agencies or for the different investigating agencies to make sure the good governance practices. Meaningful, like if you can recall the previous lectures, जो Sarbanes-Oxley Act था, so that was there basically to make sure the good governance in the market. Sarbanes-Oxley Act के बाद we have a revised sort of New York Stock Exchange rules and the NASDAQ revised NASDAQ rules and regulations, basically to make sure the good governance in the market. So Sarbanes-Oxley Act को regulate करना और Sarbanes-Oxley Act को oversee करना thousands of firms in the market. So उसके लिए we discussed in this and that lectures कि काफ़ी overburden हो गया था of budget, कि काफ़ी बजट उनका जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का बढ़ गया था, काफ़ी पैसे लग रहे थे, काफ़ी एक्सपर्टीज, दे हैव हायर डिफरेंट एक्सपर्ट्स, डिफरेंट एनालिस्ट. सो गुड गवर्नेंस की गुड इन्फोर्समेंट के लिए यू नीड सम रिसोर्सेज. मीनिंगफुल सैंक्शंस अप्लाइड in the timely period with correct burden of proof depend on legal system and legislative and judicial approaches to white collar crimes. Another thing is कि meaningful sanctions होनी चाहिए. अगर आप के market में if the firms thinks that they won't be fined or they won't be getting any sort of sentence from the Security Exchange Commission or from any agency, so obviously it's very hard to expect governance practices from these firms. In short, we can say कि suppose अगर market में firms को ये डर नहीं होता कि हमें कोई फाइन करेगा या हमें कोई हमारी कंपनी के रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो सकती है या ख़राब हो सकती है, या किसी किस्म का डर नहीं होता, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो गवर्नेंस गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें. सो दिस इज़ अ बिग चैलेंज इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यूज. जितनी ऐसे से ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जितने ऐसे से मार्केट वास्ट हो रहे हैं, सो गुड इन्फोर्समेंट ऑफ गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की चैलेंजेस ऐसे ऐसे बढ़ रही हैं. वी कैन सी के सर्बन्स-ऑक्सले एक्ट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, काफ़ी खर्चा करने के बाद भी डिफरेंट किस्म के स्कैंडल्स राइज हो रहे थे, डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज थे गवर्नेंस इन बिटवीन द कंपनीज, वो राइज हो रहे थे. Competition agencies and competition policies. Competition policy seeks to prevent
competitive practices and business developments or policy reforms which may facilitate these practices. Competition agencies का basic काम ये है कि to prevent anti-competitive practices and business development और पॉलिसी रिफॉर्म्स, कि किसी किस्म की अगर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही है मार्केट में तो उसको रोकना एंड उसको प्रिवेंट करना. इट एम्स टू स्टॉप अनफेयर बिजनेस टैक्टिक्स एंड abuse of market power and political office to gain excess profit. With a clear set of competition rules, the government is in better position to resist the lobbying of interest groups for preferential treatment. Another aim of competition agency is to stop or to resist the unfair business or the unfair profit from the market and to resist the lobbying of different interest groups. Like unfair profit from the market किस तरह हो सकता है? For example, like we discussed the dumping practices made by different firms or companies. Dumping practices we discussed in last lecture. वो ये है कि suppose एक firm वो इतना लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन और लार्ज नंबर प्रोडक्शन की जिससे जो उनका पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, तो फिर वो करते क्या है कि फिर वो अपने प्रोडक्ट्स मार्केट पे लॉन्च करते हैं, जिससे ये होता है कि बिकॉज ऑफ अ वेरी चीपर प्राइस, लो प्राइस, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है मार्केट में उनकी बिकॉज ऑफ हैविंग सम हाई प्राइसेस वो डंप हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं. तो जब वो बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो ये अपनी प्राइसेस हाई करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली द डंपिंग प्रैक्टिसेस. तो ऐसी डंपिंग प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए, इस ट्रेंड ऑफ गेटिंग प्रॉफिट और अनफेयर प्रॉफिट को लेने के लिए वी हैव एंटी डंपिंग लॉ और एक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट. So experience also shows that it's useful to maintain economic efficiency as a principal policy objective. Encumber competition policy with other goals such as employment, regional development and social pluralism tends to compromise the beneficial result. Means के competition policy को सबसे टॉप पे करना चाहिए. We have other issues in the market like employment, regional development and social pluralism. लेकिन अगर हम employment या अगर हम competition के जो policies हैं उस पे compromise करेंगे तो obviously we will be suffered in one way or the other in the market. In short, we can say कि जो competition policies हैं वो उसकी priorities सबसे ज़्यादा होनी चाहिए in the market. To be effective, the enforcement agencies should have adequate independent resources and necessary powers to review, investigate and intimate prosecution of anti-competitive practices. In addition to enforcement, an important role of competitive agency is to review and spell out the implication of public policies and regulations or regulatory practices on competition and efficiency. Means कि आपके सिस्टम में, मार्केट में आपकी जो कॉम्पिटिटिव एजेंसीज हैं उनमें आपके पास यू मस्ट हैव एडुकेट रिसोर्सेज ताकि वो और रिसोर्सेज एज वेल एज पावर टू रिव्यू, इन्वेस्टिगेट एंड initiate prosecution of anti-competitive practices. You must have the resources, you must have the power to review, you must have the power to investigate the anti-competitive practices. तो जब ये होंगी तो उससे ये होगा कि आपका enforcement जो होगा of good governance वो ज़्यादा होगा. What is a good competition policy? A good and effective competition policy with the objective of restraining
the emergence of monopolies and bringing in a competitive market that would ensure benefits to the consumer and overall economic efficiency, and at the same time taking cognizance of the specific needs of the developing country like India, should have the following practices. कि अच्छी कंपटीशन पॉलिसी क्या है होगी? फॉर एग्जांपल कि अच्छी कंपटीशन पॉलिसी ये है कि आप जो सोसाइटी में जो मोनोपोली का ट्रेंड है उसको वो रोके. It should be capable of controlling the misuse of market power of dominant firms. It should have कि अच्छी competition policy should have the power to resist the dominant firms in the market. It should have a clear perception of dominance and should develop unambiguous criteria for determining the abuse of dominance. कि policy की dominance मार्केट में होनी चाहिए एंड विच कैन डिटरमाइन, जो आपको बता सके कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर योर गवर्नेंस इन द कंपनी और इन द मार्केट. सो इट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द एंटी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन and provide a prescription to deal with such effects. So good competition policy ये होती है कि normally that prevent the trend of merger as well as acquisition in the market. Because with the merger or with the acquisition in the market, you may face a trend of monopoly. So उस चीज़ को कम करने के लिए अच्छी पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है. It should check barriers to entry subject to the provision of industrial policy. Good competition policy ये कि that can check the barriers to entry subject of the provision of industrial policy, कि वो check करे कि जो new entrants हैं either the environment is feasible, either the environment is favorable for them or not. And they should encourage new businesses, they should encourage infant businesses to come into the market and make positive competition for other firms. It should be capable of monitoring and preventing anti-competitive agreements between business organizations. Another main function of good competition policy is कि वो मॉनिटर कर सके और प्रिवेंट कर सके किसी भी किस्म की एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट फर्म्स. फॉर एग्जांपल अगर किसी मार्केट में फर्म्स काम कर रही हैं, सपोज 10 फर्म काम कर रही हैं और वो किसी किस्म का कोई सेल्फ डील कर लेती हैं, किसी किस्म का डील कर लेती हैं दैट वी विल नॉट रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट लेवल और एनी सॉर्ट ऑफ डील. सो उस किस्म की डील को मॉनिटर करने के लिए अच्छी पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर फर्म आपस में डील कर लेती है, सो इवन बाय हैविंग डिफरेंट फर्म्स इन द मार्केट आपको अच्छी प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगी एंड यू विल बी हैविंग हाई प्राइसेस फॉर योर प्रोडक्ट्स. सो इस किस्म की एग्रीमेंट्स इन बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मॉनिटर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए गुड कंपटीशन पॉलिसी इज़ वेरी नेसेसरी. इट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई restrictive and unfair trade practices and provide a preventive or prevention mechanism. Another function of good policy should be to identify restrictive and unfair trade practices. कि अगर किसी किस्म के कोई unfair trade practice हो रहा है मार्केट में in between the firms, तो उसको रोकना, उसको मॉनिटर करना and to give an alternative or preventive mechanisms for the trade. So it must ensure, for example, कि suppose कुछ companies they are following the rules of the country and for example they give proper taxes, they give proper feedback to the society
एंड मैनी मोर। इसके मुकाबले में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो तो ना टैक्स देती है और किसी किस्म दे आर इन्वॉल्व फॉर एग्जांपल इन स्मगलिंग और अदर बैड प्रैक्टिसेस। सो उस चीज़ को मॉनिटर करना और उस चीज़ को रोकना और मेक श्योर करना कि सारी कंपनीज एक ही तरह की पॉलिसी के अंदर काम करें, एक ही तरह की रेगुलेशन के अंदर काम करें। It must ensure that competition leads to better productivity and efficiency and wider choice to consumer. Good competition policy basically should make sure कि आपके जो competition in between the firms, they should ensure good productivity and efficiency and produce or encourage or make sure different or different products in different varieties. The policy should apply to all major. The policy should apply to all the major segments of the economy, including agriculture, agribusiness, manufacturing, infrastructure, utilities, and services. So competition policy should cover all major segments of the economy, जिसमें हमारे पास like agriculture, like manufacturing, infrastructure, even the service industry or the utilities. So market में जितने भी business हो रहे हैं, if it's manufacturing side or if it's the service side, so सबके लिए proper competition policy होगी, तभी आपकी सोसाइटी में, आपके मार्केट में, आपके जो कैपिटल मार्केट है उसमें यू विल हैव गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन बिटवीन द फर्म्स. इट मस्ट प्रोवाइड सुटेबल डिफेंस एंड प्रोटेक्शन measures to the marginal or weaker enterprises in a small scale sector which have national importance. Suppose अच्छी कंपटीशन पॉलिसी वो होती है जो सोसाइटी में, जो मार्केट में अगर छोटी फर्म है तो उसको सेफ गार्ड करे, उसको प्रोटेक्ट करें. The policy must accommodate international factors and influence in the national interest. Good policy basically अच्छी policy वो है competition policy कि they should understand and they should adopt the global norms or ethics practices for the governance rules. Means कि जो international standard of गवर्नेंस है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है बिजनेसेस के, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स हैं ऑफ गवर्निंग योर बिजनेस, उसके अडॉप्ट करें, बट कीपिंग इन माइंड योर नेशनल इंटरेस्ट कि आपके नेशनल इंटरेस्ट क्या है. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि आपकी गुड कंपटीशन पॉलिसी शुड कवर द ग्लोबल नॉर्म्स, द ग्लोबल एथिक्स ऑफ बिजनेस, बट फॉर द बेस्ट interest of your national security or national interest. So the policy should be able to create a level playing field for different categories of enterprises and must target an optimum degree of competition, so which is in the best interest of the economy from the point of view of growth, equity and social justice. So अच्छी पॉलिसी बेसिकली दे आर टारगेटिंग द ऑप्टिमम डिग्री ऑफ कंपटीशन के जो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि जिसमें आपके पास ग्रोथ हो, जिसमें सोशल जस्टिस हो एंड दैट कैन मेक द इक्विटी जस्टिस ऑफ द डिफरेंट कंपनीज. So competition boosts corporate governance. In a competitive environment, firms generally cannot expect to earn excess profits. Competition environment normally firms they are earning profit, लेकिन unfair profit को वो restrict करता है competition.
An industry that generates above average profit tends to attract new competitors, which bring forth additional supply and drive down profitably. Suppose agar a company, if they are engaged in unfair profit in the market, so obviously बाकी because of having positive competition in the market, वो firm they will collapse simply. For example, कंपनी में या सोसाइटी में 10 कंपनियां काम कर रही हैं एंड सपोज दे आर मेकिंग द सेम प्रोडक्ट. सो अगर नो कंपनीज इफ दे आर सपोज चार्जिंग द सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल 10 कंपनियां पेन बना रही हैं और 10 ऑफ द सेम साइज ऑफ द सेम क्वालिटी, और 9 कंपनीज एक पेन की चार्ज करता है 10 रुपए, लेकिन दूसरी कंपनी वो चार्ज करते हैं 20 रुपए. सो व्हाट विल हैपन, होगा क्या कि वो तो कुछ अरसे के लिए प्रॉफिट कमा लेगा, वो एक कंपनी जो चार्ज करे 20 रुपए, लेकिन कुछ अरसे के बाद ऑब्वियसली उनका बिजनेस मार्केट में खत्म हो जाएगा. सो नॉर्मली गुड कंपटीशन बेसिकली जो अनफेयर प्रॉफिट है ट्रेंड उसको खत्म करता है. सो एन इंडस्ट्री दैट जनरेट्स above average profit tends to attract new competitors, which bring forth additional supply and drives down profitably. Where natural barriers to entry are high, excess profit may persist and interim regulations may be needed to protect the consumers. Over time, however, technological advances and entrepreneurial innovations tend to chip away the natural barriers unless they are prevented by the regulations. So, for example, अगर किसी market में if there is a natural barrier to entry for the new firms, कि new firm का enter होना मुश्किल है, so good competition basically that reduces that barrier, that trend of entering for new entering of new markets or entering of new business in the market. So to withstand competition, firms need to rely on operational efficiency. So if you want to remain in the firm, in the society, if the companies or the businesses, they want to remain in the market, so obviously they will have to show their operational efficiency to compete. So where competition is intense and global in scope, more firms realize that corporate governance make good business sense. Means कि जब किसी सोसाइटी में कंपटीशन होता है, so normally the companies they realize कि अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस उनके लिए फ्रूटफुल है. सपोज एक कुछ कंपनीज हैं जिनके दरमियान कंपटीशन है, सो ऑब्वियसली ऑल कंपनी दे विल ट्राई टू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नेंस फॉर देयर कंपनी. इन्वेस्टर्स सीक्स आउट फर्म दैट रन द बिजनेस एफिशिएंटली, ट्रीट शेयरहोल्डर्स इक्विटेबली and comply with high standards of disclosure even when they are not mandatory. By applying good governance, a firm can earn a good reputation and efficient access to finance, which in turn enhance their ability to compete. So if once the firm got this clue कि भाई जब हम to get into this market or to compete in the market, we must have a sort of like good governance practices. उससे क्या होगा? That will increase the reputation and efficiency of the market. That will give them to the finance access to the finance, and obviously which in turn enhance their ability to compete. तो उससे क्या होगा कि आपकी competition की ability बढ़ेगी. In fact, good governance become an instrument of competitive strategies. In short, we can say कि अच्छी governance basically becomes an instrument of competitive strategies. कि
गुड गवर्नेंस आपकी जो become a sort of instrument for your comparative strategies. So that was basically the discussion about the monopoly competition and the corporate governance, that how a monopoly can disturb or can resist the governance practices in the market, and how the competition can encourage, can boost the governance practices. Like first we introduced, like monopoly is one that one person or company control 1/3 of the local and national market. Abuse of monopolies are कि monopolies में you face high prices, wrong allocation of resources, abuse of investors market by giving wrong information, preventing inventions, economic instability, corruption and bribery, economic power in the hands of few. So these were basically some abuses of the monopolies. के prices ज़्यादा होती है, you may face wrong allocation of resources, investors और market को normally companies wrong information देती, because nobody is there to check or to compete with that monopolistic firm. And preventing inventions in the society जहाँ पर monopolies होती है कुछ firms की, so you won't see any sort of creativity, any sort of invention, new invention or entrepreneurial activities, जिससे that disturb the economic stability of the society. Obviously that encourages corruption and bribery, and because के economic power कुछ लोगों के हाथ में होती है, so obviously the trend of corruption and bribery would be there. Anti-monopoly laws prevent firms to make monopoly and prevent unfair price discrimination. Anti-monopoly laws ये है कि firm की monopoly को वो prevent करती है, as well as unfair price discrimination. Competitive firm is preferred because low prices avoid wastage for competition, efficiency and consumers' taste and preferences. कंपटीशन फर्म इसलिए प्रेफर की जाती है बिकॉज कि आपको अच्छी प्राइस मिले, वेस्टेज रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा ना हो, प्लस आपकी यू मे फाइंड एफिशिएंसी इन द मार्केट, एंड द बेसिक थिंग इज कि कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंस मिले. इन द कॉन्सेप्ट ऑफ और लॉजिक एंड बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन, कुछ जो और बेनिफिट्स हैं, यू हैव एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ और कल्चर that leads more producers and sellers. जब आपकी competition होता है तो obviously you may find more producers and sellers in the market. That obviously increase the supply capabilities because जब आपके पास more suppliers होंगे, जब आपके पास more producers होंगे, more sellers होंगे, so obviously you will find more supplying capabilities. जिससे क्या होगा कि ऑब्वियसली जब आपके पास एक्सेस नंबर ऑफ फर्म्स होंगे, सो बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन बिटवीन दीज फर्म्स दे विल गो फॉर द रिसर्च एफर्ट्स कि हाउ वी कैन मेक न्यू प्रोडक्ट, हाउ वी कैन मेक डिफरेंट प्रोडक्ट, और हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट फैक्टर. सो ऑब्वियसली दैट विल रिड्यूस द वेस्टेजेस and improvement and improve the efficiency and productivity, because the customer focused is there, and this will encourage more access to the foreign market and favorable environment for trade and investment. Obviously that will encourages competition market, a competitive market encourages more trade and investment, best sources utilization and wide range of available goods and services. Regulation of competition must be regulated through some legislation which helps in firm dominance prevention or prevent monopolies, controlling anti-competitive acts like full line forcing and predatory pricing. Through proper legislation, to proper regulations, you can control the
trend of favorable competition in the market. Then corporate governance under limited competition, regulatory barriers weaken the managerial efforts and board supervisions leads to governance issues. जब regulations गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, फर्म्स की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी वो डिस्टर्ब भी हो सकती है. Constraint to competition in developing countries, nationalization and public interest causes constraint to firm to work efficiently. Mostly developing countries में गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है दैट इज नेशनलाइजेशन एंड द पब्लिक इंटरेस्ट. सो ऑब्वियसली इस चीज़ को जहन में रखते हुए फिर जब वो पॉलिसीज बनाते सो दैट मे नॉट बी फेवरेबल फॉर द पॉजिटिव कंपटीशन इन द मार्केट. बैंक्स रोल इन रिस्ट्रेनिंग emergence of securities market. Bank credit reduces the need to invest in securities market. क्या obviously कि बैंक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्योरिटी मार्केट के इमरजेंस में, बिकॉज अगर बैंक क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा है और कंपटीशन लेवल इतना नहीं है मार्केट में तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे सिक्योरिटीज में, बल्कि दे विल गो इन द bank deposits. Bank can play a vital role to analyze the company's value for further businesses. Lack of competition promotes ownership concentration, and more competitive market results in more public firm, and less competitive market results in more private firms. Obviously जब market में competition level strong नहीं होगा, इतना सख्त नहीं होगा, तो obviously फिर firms पब्लिकली लिमिटेड या पब्लिकली रजिस्टर्ड नहीं होंगे. सो उससे क्या होगा कि अगर कंपटीशन लेवल स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली द फर्म विल गो टू द पब्लिक फॉर बिजनेस, या अगर कंपटीशन लेवल स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली दे विल स्टे विद द प्राइवेट फर्म, विद द प्राइवेट बिजनेस. सो बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन टू मैनेजर्स, टू स्टेक होल्डर्स, जिसमें मैनेजर्स आते हैं, that managers they will work for their best or they will make their best for the company as well as for the shareholders and the products. So benefits of competition in the product market, having quality products, low prices, competition in the capital market, relationship of firms and financial institutions, because you have to show some efficiency or growth to boost the relationship with the financial institutions to get the loan or to get loan from them. कंपनीज परफॉर्म करेगी तो उसका लिंक फाइनेंस कंपनीज या बैंक से ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि इनकरेज करेगा कि वो उनसे लोन ले सके. इकोनॉमिक पावर एंड पोलिटिकल इन्फ्लुएंस, फर्म कैन टेक पोलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर डिफरेंट बेनिफिट्स. मोनोपोलिस्टिक मार्केट कैन लीड toward the political influence and would result in bad governance. Competition is the only solution. Means कि competition level अगर strong नहीं होगा तो obviously monopolistic firm will get the influence of will get the political influence. लेकिन अगर competition level सख्त होगा तो obviously because of having strong competition political influence इतना काम नहीं करता पे. So enforcement of good governance, first go for private enforcement through market mechanism, self-regulation through trade association and public enforcement. अब good governance की enforcement बहुत ज़रूरी है. It could be either through market mechanism by creating good competition between the firms. So obviously that will result good governance in between the firms. Or we can use the help. We can take the help of a trade association as well as public enforcement. So positive competition reduces the burden of enforcement. अगर आपके सोसाइटी में मार्केट में कंपटीशन पॉजिटिव है बिटवीन द फर्म्स तो ऑटोमेटिकली आपका जो बर्डन है इन्फोर्समेंट का ऑफ गुड गवर्नेंस वो कम हो जाता है. बट इन्फोर्समेंट इज इम्पॉर्टेंट. सो चैलेंजेस टू गुड इन्फोर्समेंट के इन्फोर्समेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस दरकार हैं. द फर्स्ट थिंग रिसोर्सेज, मीनिंगफुल सैंक्शंस एंड
a real big challenge of good enforcement. Competition agencies and competition policies, एजेंसीज जो कंपटीशन एजेंसीज हैं वो पॉलिसी बनाती है किस लिए, टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, टू resist the lobbying of interest group. Competition policy should be at the top, adequate resources to investigate anti-competitive practices. And a good competition policy should be there to prevent monopoly, ensure economic efficiency, control dominant firms, discourage merger and acquisition, check barriers of new entrants to market, prevent anti-competitive agreements, and apply all major segments of the economy and protect small firms. So these were basically the steps कि जो अच्छी competition policy में होनी चाहिए. But the bottom line of this topic is कि competition boost corporate governance. अगर आपकी competition level strong होगा market में तो obviously this will encourage or this will boost the governance practices in the market. So this is the end of our today's lecture. Allah Hafiz.